Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. So today I'll discuss the very important topic Trigonometry Part 3. तो फ्रेंड्स आज हम Trigonometry का Part 3 डिस्कस करेंगे. Part 1 we have already covered and Part 2 also. So before watching this video you should also watch the Part 1 and Part 2. And friends, one request from my side, you to keep subscribe this channel and also like this video if you really like our contents. तो अगर आपको हमारे कंटेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके पास नई वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन के तौर पर आपकी ईमेल आईडी में पहुंच पाए. एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी इन द bilingual nature. So what is the mean of bilingual? Bilingual, that means I'll explain this video in Hindi as well as in English also, because a lot of students are living in South India, they can't understand the Hindi. That's why I'm making this video to all of them. ओके तो देखिए, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, और जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो इस वीडियो को हिंदी में देख सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3. सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है, उसके बाद में आप पार्ट 3 को देखिए. अगर आपने अभी पार्ट 3 देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, गो टू द प्लेलिस्ट, watch the part 1 and part 2, and after that watch part 3. Now let's discuss about us. Basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then you can comment on our Facebook channel, that is facebook.com/current affairs funda. There we are posting a lot of questions and quizzes also, so kindly participate in this channel's quiz. Okay, and friends, subscribe this channel right now. Now let's discuss the basic concept and theory. And friends, so today I'll deal with basically trigonometric ratios and identities. Okay, so our topic for the today is trigonometric ratios and identity. Okay, so this is the basic concept that we will use today. So right now friends, let me discuss some identities for you. Suppose this is the right angle triangle. आज हम डिस्कस करेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी हैं, उन सारी आइडेंटिटी को आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट. सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल this angle it will be 90 degree. Okay, and this should be theta. And friends, this line AC, that is called as a hypotenuse, associated with the H, and that is a perpendicular line on this angle, so we can say that is perpendicular, that is P. And friends, BC, that is the base here, so it will be B. So here we have got few things: P, H, hypotenuse, B as a base. Okay, so there is a theorem of Pythagoras. So what the Pythagoras theorem says, that is AC square, side AC square, that is equal to the side AB square plus side BC square. Okay, so if two sides are given to you, if base is given, that means BC is given, and AB, that is perpendicular, is given, then you can easily find out the AC from here. Okay, because AC, that is AC square, is equal to AB square plus BC square as per the Pythagoras theorem. So from here, what is the value of AC? That is H square. What is the AB square here?
AB, that is P square, plus BC, that is B square. So ultimately your generalized form, this will be in this format. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है और BC जो है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है AB, और A से C तक इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको कहते हैं कर्ण, और ये बेस इसको हम कहते हैं आधार, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, LAL डिवाइडेड बाई KKA, लाल बटा कक्का जिसको कहते हैं। सो फ्रॉम हियर वी शुड अंडरस्टैंड दिस वन, PBP divided by HHV. So I'll tell you what is the basic use of this three words. Okay, P, that means perpendicular divided by H, or base divided by H, or perpendicular divided by base. So what will be the value of these segments from this राइट एंगल? ओके, तो हम बात करेंगे इस राइट एंगल में से इसको कैसे यूज करना है। तो आपको अभी याद रखना है कि AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फ्रॉम हियर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ओके, so kindly note down these two things from here. Okay, and friends, one thing more, in earlier we have written like this one, H square that is equals to P square plus B square. This is friends triplet, so we will use basically this one also. So what is the use of triplet? Triplet, that means this square, that means we can say also if there are three values, 3, 4 and 5, so this one is the greatest value here. Okay, so friends, 3 square plus 4 square, that it will be equal to the square of 5, because 3 square that is 9 plus 4 square 16, 5 square that is 25, 16 plus 9 that is 25 is equals to 25. So we can say from here 3, 4, 5, that it will be triplet from here. Okay, so from here we can conclude that the value of H square, it will be equals to the P square's value and B square's value. Okay, so there are certain triplets here, so you should also write down certain triplets, because in the upcoming question this will definitely help you. 3, 4, 5, this one is a triplet, and this is very common triplet, 5, 12 and 13. So from here 13, that is the highest side, and the highest value having the side that is AC. We can say also this one will be your hypotenuse. From there it will be either base or perpendicular, is will be either base or perpendicular, but this the maximum value that it will be your hypotenuse if you are talking about this triangle. So A, C and B, suppose it will be either 5 or 12, we don't know exactly, but this one definitely will be 13. Okay, that is why that is called the hypotenuse. From here third triplet, that is 7, 24 and 25. Okay, so you should also write down this one is the highest value, is associated as a hypotenuse, and 7 either will be base or perpendicular, 24 is either will be base or perpendicular. So the square of 7 plus square of 24, it will be complete the square of 25th. Okay, 9, 4 and 41, that is very important triplets here. So 41, this will be the hypotenuse here. And friends, I'll tell you what is the basic use of this triplets, that's why keep write down all the things. So in our upcoming lectures we will use these triplets. Okay, so next is 11, 60 and 61, next 8, 15 and
17. ओके, सो दीज आर द बेसिकली ट्रिपलेट्स. तो फ्रेंड्स, ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं जो भी हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है, अगर सबसे बड़ी साइड का हमने स्क्वायर किया है तो वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको मैं बताऊंगा जो ट्रिपलेट होती हैं, जैसे कि 3 4 5, 5 12 और 13, और 7 24 और 25, 9 40 और 41, 11 60 और 61, 8 15 और 17. ये बहुत कॉमन वैल्यूज हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं. तो आपको याद रखना है कि इसमें से ट्रिपलेट कैसे बनता है. ट्रिपलेट तब बनेगा जब किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ओके, सो फ्रेंड्स, in the previous diagram, that was our previous diagram, that is A, C and B here. So this one, that is perpendicular, this is hypotenuse, and this one, that is your base. Okay, so from here we can conclude a lot of calculations from here, like in this way: P divided by H comma B divided by H comma P divided by B. Okay, so first one, that is equals to sine theta. Okay, next one, that is equals to cos theta. Third one, that is equals to tan theta. Okay, when you are converting or opposing them, that means B divided by P, then it will become the opposite of tan theta, that it will be cot theta. So cot theta, that it will be equals to base divided by perpendicular. Okay, so if cos theta, that is B by H, so from here bottom to top, that means H divided by B, it will be sec theta. Okay, and sin theta is equal to P divided by H, that means cosec theta, it will be H divided by P, that means from bottom to top. Okay, so from here we can conclude few relations here. I am writing all these in a separate. Sin theta, that we can say sine of that theta. What is the meaning of sine theta? It will be sine of that theta. And friends, next is cos theta. So what is the meaning of cos theta? That is cosine of that theta. Next is tan theta. So what is the other name of tan? That is called the friends tangent. Tangent of that theta. Next one is cot theta. Cot theta is cot tangent of that theta. Next one is sec theta. So it will be secant of that theta. So theta, that it will be this one theta. And right now this angle will be 90 degrees. So we can say always this is the right angle triangle. Okay, so this is the other name of, so because the question can be in the form sine of that theta or it may be sine theta, so both are the equal names. Okay, and last one, that is called the cosec theta, so it will be cosecant of that theta. Okay, so these are the names of sine theta, cos and so on. Okay, so these are the basically number 6, 4, 5 and 6. Okay, so the value of sine theta, it will be equal to P divided by H, and the value of cos theta, it will be B divided by H. So from here we can write down in a short that we can say P B P, that is divided by H and B. Okay, so if you are going from top to bottom, then it will be sine, cos and tan. If you are doing from this way, okay, from this way, then values will be cot, sec and cosec. Okay,
So you should move from this point up to this point, and from here up to here. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस. कॉस की वैल्यू होती है b डिवाइडेड बाई h. दैट मीन्स बेस को डिवाइड करेंगे आप हाइपोटेनियस से तो आपको मिलेगा कॉस थीटा. और टेन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, टेन को कॉट कर दें, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कुछ आपको चीजें बताने जा रहा हूँ. सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस वन फ्रेंड्स. साइन थीटा that is equals to 1 divided by cosec theta. We can also write down in front of sin theta that is 1 by cos theta as per the given equation. Okay, next one is friends cos theta that is equals to 1 divided by sec theta, and tan theta that is equals to 1 divided by cot theta, or we can also say this one sin theta divided by cos theta, then we can say tan theta also. Okay, so these are the important formulas that you should also understand this one. Next is friends cot theta. So cot theta that is the opposite of tan theta, that means cos theta divided by sin theta. This will be equal to the cot theta. And sorry friends, I have written a wrong value here, so it will be cos divided by sin. That is fine, but from here we can also conclude that cot theta that is equal to 1 divided by tan theta also. Okay, so that is I forget to mention one thing more. मैं एक चीज और लिखना यहाँ पर भूल गया था. cot theta को हम लिख सकते हैं 1 divided by tan theta, और cot theta को वैसे हम क्या लिखते हैं cos divided by sin, और tan को क्या लिखते हैं sin theta divided by cos theta. ओके, सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझने हैं. ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर. कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को डिजाइन किया जाए और हाउ टू प्रिपेयर द बेसिकली अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. ओके, सो आई विल हेल्प यू टू डिजाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, these are the basically your all the names, that is sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Let me write down sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec and cosec theta. Okay, so these are the basically sines functions name. And friends, here we will write the degree here. That means 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree. And next here we will find out the 15 degree and 75 degree. Okay, so what is will be the value of sin theta? Sin 0 degree. How to find out? So friends, I'll basically explain a little bit trick here. First of all, write down 0, 1, 2, 3, 4. Okay, only write down the numbers here 0, 1, 2, 3 and 4. Divide by 4. Divided by 4 here, 3 by 4 here and 4 by 4 here. Take the friends under root here. तो सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर हमें इसका अंडर रूट ले लेना है. अब अगर एक वैल्यू आ जाएगी उसके बाद में हमें आपको सारी की सारी 6 वैल्यू निकालना सिखा दूंगा कि आप 6 वैल्यूज कैसे निकालते हैं. ओके, सो सी फ्रेंड्स, राइट नाउ sin theta that is equals to 0 divided by 4. Okay, so 0 divided by 4, it will be 0. 1 divided by 4 in under root 2, so we can write down 1 divided by 2, and root 2 divided by 4, that means it will be 1 by 2 here, 1 times and 2 times 1 by 2, so
if you are eliminating the root, then you will get the value here from, that is 1 by root 2. So 1 by root 2 it will be here, and root 3 by 4, when you will cancel out the root from here, then you will get, friends, under root 3 by 2. Okay, and 90 degree, what it will be, root 4 by 4, that is 1. That means say we can write down 1 here. Okay, so friends, what will be the value of 15 degree? So you should write down this one, because there is no method to find out this one. So I am writing directly from here, under root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Okay, what will be the value of 75 degree? It will be root 3 plus 1 divided by 2 root 2. 2, that is root 2. Okay, so I'm writing a little bit here, because there is no such space. That's why I'm writing in a small letter. Okay, so friends, how to find out further these calculations? Okay, so first of all, that 1 is here, so copy 1 here, and root 3 by 2, this will be from this place, and 1 by 2, this will be from this place. Just reverse them. 1 by 2 it will be from here, and 0 it will be from there. Okay, so what is the value of tan theta? I earlier told you sin theta divided by cos theta, that is equal to tan theta. So friends, 0 divided by 1, 0 divided 1 always give you a result of 0, and 1 by 2 divided by under root 3 by 2. So 2 and 2 will be cancelled out. You will get directly 1 by root 3 from here. Okay, so 1 by root 2 divided by 1 by root 2, it will be 1 times, and under root 3 by 2 divided by 1 by 2, that means under root 3, 2 and 2 it will be cancelled out. And friends, 1 divided by 0, 1 divided by 0, that means infinity. Okay, so what will be the value of 15 degree? Cos 15 degree, it will be, just reverse them, root 3 plus 1 divided by 2 root 2, and this one will be there, root 3 minus 1 and divided by 2 root 2. Okay, so divide this value by this value, sin divided by cos, you will get the value of tan. So 2 root 2 and 2 root 2, this will be cancelled out. So from here you will get, friends, basically 2 minus root 3. Okay, next here you will get 2 plus root 3. Okay, so these are the basically three functions. You just need to calculate the first, second and third, and after that, friends, just reverse them, because sin theta, if the value of sin 0, that is 0 degree, when you will oppose them, that means 1 divided by sin theta, then you will get this value from here. So 1 divided by sin theta, that will be the value of cos here. So from here sec theta, that means 1 divided by cos theta. Cot theta, that means 1 divided by tan theta. Okay, so these are the basically three fundamentals here, and after that these three values you will calculate yourself. That is your assignment. Okay, that is the way to find out the table. तो मैंने आपको आज बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाएगी. तो आपको करना क्या है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है. इसके बाद को इनको 4 से डिवाइड करना है, फिर आपको इसका रूट ले लेना है. तो रूट 4 बाई 0 बाई 4 या 0 होगा. रूट के अंदर अगर 1 बाई 4 है तो ये 1/2 हो जाएगा. इस तरह से आपको पहली लाइन लिख लेनी है. फिर आपको पहली लाइन का रिवर्स करना है. 1 की वैल्यू यहां आ गई, उसके बाद ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू एज इट इज 1/2 यहां पर आ गया, और ये 0 था, ये यहां आ गया. अब हमने पहली वाली साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो हमें टेन थीटा मिल गया. पूरी लाइन हमारी आ गई. उसके बाद में फ्रेंड्स कॉट थीटा कैसे निकालोगे आप? टेन का अपोज होता है, 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा. तो आप इस तरीके से इस चीज को खुद से सॉल्व करोगे. ओके, दैट इज योर असाइनमेंट. Next, friends, we will discuss a lot of questions here. So friends, there is few things here. If let me write down,
if that is a zero value, if you are dividing with any number, then you will get basically 0. And if you are dividing any number with infinity, that means you will get 0 from here. If you are dividing any number with 0, then friends, that is infinity. Okay, and friends, if you are dividing 0 divided by 0, that means not defined. This calculation is not defined in any of the calculator. Okay, and infinity divided by infinity, that is also not defined. ओके, सो दीज आर द फ्यू टर्म्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड. अगर आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. और नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं, कोई इंफिनिटी टर्म है उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा जीरो. नंबर को अगर आपने जीरो से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा? इंफिनिटी. और जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इस चीज की कैलकुलेशन मेंशन नहीं है, ये आपको एरर देगा, नॉट डिफाइंड. और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ये भी सेम होता है. ओके, तो अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन फ्रॉम हियर. There are certain questions based on these topics. Okay, so we will decode one by one, and friends, there will be approx 5 to 6 topics will be in the trigonometry. So this is the part 3 here. So we will decode further topics in our upcoming lectures. So right now I am solving some few lectures from here. Okay, so write down, find the value of 2 cos square theta minus 1. It will be in this bracket, and this will be multiplied with 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta plus 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Okay, suppose this is the question here. 2 cos square theta minus 1 multiply with 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta plus 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. So you need to calculate the value of these equation. Okay, so friends, your options will be 0, 1, minus 1 and 2. So what will be the right answer from here? So we will solve this question in a very smart way. If you are solving this equation, then you will take, I think, 1 or 2 page. But in competitive exams you don't need to do this, because you need to solve this question in a very smarter way. आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम्स में, तो आप 1 से 2 पेज अगर फिल करके आते हैं तब आप सॉल्व करते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील. एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टर वे में सॉल्व करना है. ओके, so friends, first of all, note down a basic concept here. You should put the value of theta in this equation. Put the value of theta. But remember that your answer should not be infinite. Your answer should not be infinite. Okay, so there is a comment for you. For solving such kind of questions, you should put the value of theta that is equals to any value. That means 0 degree or 30 degree or 45 degree or 60 degree. But due to that, your answer should not be infinite. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करना है अपने आप से मानकर. सबसे पहले स्टार्ट आपको 0 से करना है, फिर आपको 45 डिग्री रख लेना है, फिर आप इसमें 30 डिग्री रख सकते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन उसके कारण आपकी इक्वेशन जो है इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं पुट theta that is equals to 0 degree. Okay, so from here what it will be? 2 cos square theta, that means cos 0 degree. Cos 0 degree, that means 1. From previous table you can see this one, friends. What is the value of cos 0 degree? Cos 0 degree, that is 1 here. Okay, so 2 into cos 0, it will be 1
and minus 1 as it is, bracket should be closed out. So what will be here? What is the value of tan 0 degree? Tan 0 degree, that is 0. So 1 plus 0 divided by 1 minus 0 plus would be here. So 1 minus tan theta, that means 1 minus 0 divided by 1 plus 0. So friends, from here our question, our equation will never get a infinite results. Okay, that means that is okay. So from here 2 into 1, that is 2. 2 minus 1, it will be 1. So 1 divided by 1 plus 1 divided by 1, it will be 2. So 2 into 1, you will get a result of 2. That it will be your answer, friends. So what is the right answer? That is the option having an answer, that is 2. That is your right answer. So what the value of these equation? That it will be 2. Put any value of theta, any degree theta, that is theta is equal to 0 degree, or either you can take, first of all put the 0 degree, and after that 45 degree, and after that 30 degree. From these three equation, from these three values, your equation will definitely sort out. तो आपको करना क्या है, थीटा की वैल्यूज रखनी है, उसके बाद में आपका इक्वेशन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। यही केवल एक तरीका है एग्जाम्स में बहुत स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप प्रैक्टिस इतनी करिए कि आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस नेचर का है। ओके, there are few examples here, friends. So next example is there. Find, you need to find 5 divided by sec square theta plus 2 divided by 1 plus cot square theta plus 3 sin square theta. You need to calculate this equation. Okay, so if you are solving the equation from converting sec square theta, that is equal to 1 divided by something something, then you will never get the exact solution within a time. So you should calculate this equation in only 1 minute, below 1 minute. So how you will do that? Put the value of theta. First of all, put theta, that is equals to 0 degree from here. So what it will be? 5 divided by sec 0 degree. The value of sec 0, that is always 1. So 5 divided by sec 0 degree, that will be 1, plus 2 divided by cot square theta. Cot theta, cot 0 degree, it will be infinity. So it will be 2 divided by 1 plus infinite. Okay, and friends, sin square theta, that means sin 0. Sin 0 always give you a result of 0. That means 3 into 0. So friends, from here, that is 3 into 0, it will be 0. Okay, so cancel out this one, it doesn't matter, it never reflect in your equation. So 5 divided by 1, it will be 5, plus 2 divided by 1 plus infinity, it will be 0, and 3 into 0, it will be also 0. So your result, it becomes 5. That is your correct answer. तो देखिए इस क्वेश्चन को कितने तरीके से हमने सॉल्व किया है कि हमने क्या करा है, थीटा की वैल्यू को 0 पुट किया है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री अप्लाई करने के बाद में आपने इस इक्वेशन को 1 मिनट से आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सारी वैल्यूज पता है कि साइन 0 कितना होता है, सेक 0 कितना होता है, कॉट 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है। ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप इस इक्वेशन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर in the same type. Your equation is this: sec square theta, just a minute friends, let me write down one second, that is question number 3. C, sec theta minus cos theta, that is whole square here, plus cot theta minus tan theta, that is whole square, and friends cosec theta minus sin theta whole square. So what will be
द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, तो आपकी ये इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो लेकिन हमें क्या करना है, इक्वेशन को इनफाइनाइट नहीं होने देना है, इसलिए मैं थीटा को रखूंगा 45 डिग्री। थीटा इट विल बी 45 डिग्री here. So what the value of sec 45? It will be under root 2, and friends cos 45 it will be 1 by root 2. So this will be the whole square here, plus friends cot theta, cot 45 that is 1 minus 1 it will be whole square, plus next cosec 45 degree that it will be root 2, and sin theta sin 45 it will be 1 by root 2, and this will be whole square here. So from friends, if you will solve this one, so root 2 into root 2 that will be 2, 2 minus 1 that is 1 by root 2. So this will be the square of 1 by root 2's square. From here this will be basically 0, and this will be also the same, that is 1 by root 2's whole square. Okay, so 1 divided by root 2's whole square, it will be half, plus half it will be ultimately 1, that it will be your answer. तो ये आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप अगर इसको ओपन करोगे उसके बाद में आप कटिंग करोगे तो आपका ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं सॉरी गाइस, तो जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी तो क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। आप इसको ट्राई करके देखिए खुद से। sec 0 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 0 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cosec 0 डिग्री माइनस sin 0 डिग्री। लेकिन हमें क्या है, इक्वेशन को इनफाइनाइट नहीं बनाना है, इसलिए मैंने थीटा की वैल्यू 45 पुट की। इससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई और हमारा रिजल्ट भी आ गया। सो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू ही वहां पर पुट करनी है। इन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस you should put the value of theta. And friends, please like this video and also comment your problems and suggestions in below this video, and keep share this video because a lot of people will get advantage from your side. That's why I'm telling to you to subscribe this channel and share this video. Okay, तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो पर लाइक बटन प्रेस करना है, और अपने सजेशंस एंड सुझाव जो भी आपके पास हैं वो आपको इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को बताना है आपको। और जो भी आपकी कोई वीडियो है आप उसको चैनल के नीचे लिखिए, हम जरूर बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जल्दी से आप ज्योमेट्री और अलजेब्रा और मेंसुरेशन खत्म करिए। तो पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ में मैं एक टॉपिक अरिथमेटिक एप्टीट्यूड है उसका भी लेके चलूंगा, और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम कम्प्लीट करेंगे। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।